हेलो एवरीवन, आई एम आर के रवि सर और मैं आज आपको दो बेहतरीन एल्गोरिदम के बारे में, जिसमें ग्रीडी एल्गोरिदम और डायनामिक एल्गोरिदम के बारे में बताने वाला हूं. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ग्रीडी एल्गोरिदम? एज द नेम सजेस्ट्स, इट्स अ ग्रीड बेस्ड एल्गोरिदम which is unknowing with based on the locally best possible solution, which may or may not give you the guaranteed best solutions, while a dynamic algorithm is a guaranteedly optimized or the best solution provider, because it divides the problem and gets the best possible solutions from starting anywhere else. So the examples and the differences are, greedy algorithm takes locally best possible solutions, that is by like a minimum spanning tree, in which you have read about the Prim's algorithm and the Kruskal's algorithms. Also the fractional knapsack problem, while in the dynamic algorithm we can say 0-1 knapsack problem, lowest common sequence LCS problem. तो ऐसे बहुत सा longest common sequence problem, ऐसे बहुत सारे algorithms हैं जो इसके थ्रू कवर किए जाते हैं. थैंक यू.